Okay, my dear students, welcome back to the thermodynamics class. So, in thermodynamics, we had seen so far, in thermodynamics, we had seen the system, process, system समझा हमने, then surrounding समझा, system, surrounding, types of system. So we had seen system, then we had seen surrounding, then types of system. Types of system क्या क्या देखा हमने? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. देन वी हैड सीन thermodynamic properties, two types, intensive and extensive. After properties, we had seen the process. Process is a path or operations carried out to bring about the change of state. तो एक स्टेट को दूसरे स्टेट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस आर कैरीड आउट. एंड प्रोसेसेस में टाइप्स ऑफ प्रोसेस: आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक. These four processes we had seen. Now we will move to a very important process, and that is a reversible process. This is something very important because such type of process can provide work maximum. So, reversible process. Now let us see here a general reaction where A are the reactants. They get converted to B product. This conversion of A to B is in forward direction. Hence we can call this as a driving force. And force bring about the change. So reactant A get converted to product B by a driving force which takes reaction in forward direction. It takes the reaction in forward direction. At equilibrium क्या होगा? At equilibrium this driving force is exactly equal to opposing force. ये इसका opposing force हो गया. Opposing force. So what we will have to remember at equilibrium. At equilibrium, driving force is equal to opposing force. Driving force is equal to opposing force. Driving force is equal to opposing force, then the reactant and product are in same quantity. तो यहाँ पर equilibrium है. When driving force is equal to opposing force, there is an equilibrium. And if we want to bring about some change in this process, that is reactant को product में convert करना है या product को reactant में convert करना है ना? तो product को reactant में या reactant को product में करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर reactant को product में convert करना है तो driving force को थोड़ा बढ़ा दो. Increase driving force by a very smaller amount.
increase in driving force will convert A to B. At the same time अगर आपने if opposing force या जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं, है ना, if opposing force is increased by a very small amount, what will happen? B will be converted back to A. So that means A can be converted to B by a very small change in driving force. Whereas at the same time, if we increase the opposing force by a very smaller amount, क्या होगा? Product get converted to reactant. This very small change of force or pressure is what we call as infinitesimally smaller amount. यानी अगर किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल करना है तो आप क्या करेंगे? उसके अपोजिंग फोर्स को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉलर अमाउंट से बढ़ा देंगे. थोड़ा सा बढ़ा दो, अपने आप क्या होगा? ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगी. वैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. आप ड्राइविंग फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स बढ़ा दिया, किसके कंपैरिजन में? अपोजिंग फोर्स के, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी. दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. A reversible process is that process in which driving force and opposing force differ by infinitesimally smaller amount. Any time we can make the process reversible by changing driving force or opposing force by a very smaller amount to be called as infinitesimally smaller amount. So by changing driving and opposing force we can have a reversible process. So what is a reversible process? A reversible process differ, or rather a reversible process in which driving force is infinitesimally smaller than opposing force. So driving force is infinitesimally smaller than opposing force. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, in a reversible process driving and opposing force differ by a infinitesimally smaller amount. So what is a reversible process? A reversible process which can be converted back to reactant just by increasing the opposing force by an amount. What is that amount? Infinitesimally smaller amount. So in a reversible process,
reversible process, driving force and opposing force differ by infinitesimally smaller amount. Infinitesimally smaller amount. So this is the reversible process. Now, in case of reversible process, what more we can see, that reversible process is a hypothetical process. It is a hypothetical process or imaginary process. So reversible process are imaginary or hypothetical process. A change in process can be brought about by changing driving force or opposing force by an infinitesimally smaller amount. So अगर हमें कोई प्रोसेस में कुछ चेंज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉलर अमाउंट चेंज करने से आता है तो वो प्रोसेस रहेगी रिवर्सिबल प्रोसेस. A change in process can be brought about by changing driving force or opposing force by a infinitesimally smaller amount. So we can call such process as reversible process. Now, such reversible process takes place very slowly, infinitesimally slow process. Infinitesimally slow process. Infinitesimally slow process takes place in infinite number of steps. So they are infinitesimally slower process and can takes place in large number of steps or infinite number of steps. So because क्या है कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स ये दोनों क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. सो दे ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस there is always an equilibrium. There is always an equilibrium with surrounding. There is always an equilibrium with surrounding in every step. Each step, एक स्टेप कंप्लीट हुई, इक्विलिब्रियम विद सिस्टम और सराउंडिंग का इक्विलिब्रियम हो जाएगा. कौन सा? ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग. तो कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्विलिब्रियम. सो देयर इज ऑलवेज टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्विलिब्रियम इन एवरी स्टेप with the surrounding. So reversible process
is carried out very slowly in infinite number of steps, and in those infinite number of steps it always try to maintain a temperature pressure equilibrium with the surrounding. So this is what the reversible process, which differ, in which driving and opposing force differ by infinitesimally smaller amount. Now as it maintain temperature pressure equilibrium at every step with surrounding, what more we can get, this will provide, it provides work maximum, provides maximum work, क्योंकि लॉस नहीं होता है ना, हर बार हर स्टेप में टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट, तो उससे क्या होगा कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम वर्क. सो दिस इज व्हाट वी से रिवर्सिबल प्रोसेस. सो अब इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम विल बी रीच एट द एवरी स्टेप, है ना. इट इज मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम विथ एवरी स्टेप with the surrounding, and this is what important, it is an imaginary or hypothetical process. So in practice we cannot have a reversible process. अब आपको अगर पूछे तो आप शायद सोच सकते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस तो वो वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फिर वाटर कैसा है, इवेपोरेट होता है और उसके फिर क्लाउड्स बनेंगे, फिर क्लाउड से रेन आएगी और वापस वाटर जमा हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये वाटर फिर से इवेपोरेट होगा, क्लाउड बनेगा रेन के फॉर्म में. सर ये तो रिवर्सिबिलिटी हो गई, लेकिन ये रिवर्सिबिलिटी कैसी है? दिस इज असिस्टेड बाय टेम्परेचर, है ना. टेम्परेचर सराउंडिंग का कैसा होता है? बढ़ने लगता है. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर इवेपोरेट होने लगता है, और फिर वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा तो कंडेंस होगा, तो वहां टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो कंडेंस होके क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश हमें दिखाई देती है. तो वो रिवर्सिबिलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग इज ओके, बट थर्मोडायनामिक रिवर्सिबिलिटी इज नॉट दैट, है ना. इसीलिए कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल नहीं होती है. तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है. अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, वेयर ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स differ by infinitesimally smaller amount. A change in process can be brought about any moment of time, either by increasing driving force or by increasing opposing force. By how much an amount? By a very smaller amount called as infinitesimally smaller amount. And it takes place very slowly, and it has infinite number of steps. यानी प्रोसेस चल ही रही है, कभी कंप्लीट नहीं होती है, इसीलिए तो इमेजिनरी बोल रहे हैं बेटा इसको. तो इट टेक्स प्लेस वेरी स्लोली in and it requires infinite number of steps, and it maintains a temperature pressure equilibrium with surrounding in every step, and therefore net loss of energy is not observed. Hence such process provides maximum work. So this is reversible process. Okay, now we will move to the next aspect, that is nature of heat and work. We will move to the next topic. इसी में नेचर ऑफ हीट एंड वर्क. अब ये नया फंडा हम लोग यहां से
शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ लिया आपने, है ना, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, और आज हमने पढ़ा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस आर इमेजिनरी hypothetical process in which driving force and opposing force differ by infinitesimally smaller amount. They are very slow, requires infinite number of steps, and every step has temperature, pressure, equilibrium with surrounding, and it can provide maximum work because there is no net loss of heat energy in the process. Now we will move to the next, nature of heat and work. Now in mechanics, what is work? In mechanics, what is work? Work is force into displacement. Force, तो पूरा ही लिख लेता हूं, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये इतना पता है अपने को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वर्क कब होता है? व्हेन एनर्जी इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस समथिंग बाय द फोर्स इज व्हाट वी कॉल एज वर्क। तो ये W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क। Work is force into displacement. So that means W is equal to force into D. D is the displacement. So W is force into displacement. This is what we see. But in mechanics, but in thermodynamics, work is pressure volume type of work. But in thermodynamics, work is what? Work is pressure volume type. Pressure volume type of work. That means a gas when a gas is expanded, its volume get increased and work done takes place. Similarly, when a gas is compressed, volume decreases and we call it as work of compression. And these two, expansion and compression of gas, is what? The pressure volume type of work. So, मैकेनिक्स के हिसाब से क्या होता कि वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क डन इज अचीव्ड। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि वर्क इज नथिंग बट इट इज अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। लेट अस सी, पीवी जो है ये वर्क होता है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। नाउ व्हाट डू वी, प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया। Pressure is force per unit area into volume. लिख सकते हैं ऐसा हम, PV को क्या लिख सकते हैं? Pressure is force per unit area. तो PV is equal to F by A into V. If D is the displacement, then A is equal to D square and V is equal to dq होगा ये। If D is the displacement, then A is D square and V is dq. Therefore, हम क्या लिख सकते हैं? PV is equal to force upon area into volume, which is equal to force upon d square into dq. लिख सकते हैं। अब यहां से अगर ये कैंसल हो गया तो क्या बच गया? d. Therefore PV is equal to force into displacement. आ गया क्या? देखो, PV is equal to
displacement, force into displacement, और force into displacement is nothing but work done. यानी अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, by comparing 1 and 2 equations, what we see that PV is equal to W. PV is equal to W. So that means in thermodynamics, work is what? It is a pressure volume type of work. अब ये फंडे को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि दो एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं, है ना? To understand this PV is equal to work done, PV is equal to work done, let us consider two chemical reactions taking place in a cylinder fitted with weightless movable piston. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कुछ. To understand work as pressure and volume, let us consider following reactions. Taking place in a cylinder. In a cylinder fitted with weightless movable piston with some mass placed over it. देखिए जी क्या क्या लिख रहे हैं हम, है ना? इसको समझना है अब हमें कि वर्क जो थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है, तो उसे हम समझते हैं. उसके लिए क्या करते हैं कि लेट अस कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सिलेंडर fitted with weightless movable piston with some mass placed over it. तो इसको जरा डायग्राम से समझते हैं, है ना? तो let us make two diagram here. To figure we will make, so a cylinder which is having piston, weightless movable piston, weightless movable piston having some mass over it, having some mass over it. तो ये मास हमने इस पिस्टन पे रख दिया. तो इस पे ये प्रेशर जो है ये पिस्टन का एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा, which is acting on the piston. And here we take hydrogen peroxide gas. Okay. Now consider decomposition of H2O2 gas, hydrogen peroxide. अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हम लोग देखेंगे, तो इट इज इन लिक्विड फॉर्म. हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड, इसका डिकम्पोजिशन देखते हैं. तो इट डिकम्पोजेस इनटू व्हाट? इट डिकम्पोजेस इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस. बैलेंस है क्या? रिएक्शन देख लो. 4 हाइड्रोजन 4 oxygen. So it decomposes into water and oxygen gas. So there is a production of oxygen gas when this H2O2 is allowed to decompose.
when it is allowed to decompose. So initial, this is what initial state before reaction. और यहाँ पर फाइनल स्टेट आफ्टर decomposition or after the reaction. After the reaction, डिकम्पोजिशन हो गया. अब क्या होगा डिकम्पोजिशन होने से? ये इसका ओरिजिनल लेवल रहेगा, है ना, ऑलमोस्ट उसके जैसा ही हमने कर लिया. अब यहां पर O2 गैस बनेगी. इट इज रिलीज. This will push the piston in upward direction. When this will push the piston in upward direction, piston travel a distance in upward direction, and during that this mass is also taken up by the gas in the upward direction. So mass also travel through that distance. So that means when this process takes place, when the decomposition of hydrogen peroxide takes place, what happens? The gas which produced in the cylinder pushes the piston in upward direction due to increase in volume, and that increase in volume takes away the piston in upward direction, as well as the mass which was placed over the piston. तो mass का भी displacement हो गया. Piston has, it is a movable frictionless piston, so it moves in upward direction. That means here the energy of the system is used to perform what? To perform the work of expansion. Work of expansion of gas. Expansion of gas, which is indicated by the difference in the पोजीशन. तो ये क्या हो गई इसकी इनिशियल्स, और ये इसका फाइनल वॉल्यूम. ये V1 हो गया और ये V2 हो गया. तो V2 इज ग्रेटर देन V1, तो वॉल्यूम चेंज हो गया बाय चेंज ऑफ प्रेशर. तो ये जो वर्क हुआ, ये वर्क किसने किया? सिस्टम ने, है ना. तो वर्क डन बाय द सिस्टम on the surrounding. Work done by the system on the surrounding by using its own energy. By using its own energy, the system has used its energy to bring about this displacement of mass and piston in upward direction due to expansion of gas. So such type of work is what we call as pressure volume type of work, and in this work is done by the system on the surrounding, and this is a work of expansion. Work of expansion. Now what happens to the energy of the system? What happens to the energy of the system? Energy of the system decreases. Energy of the system decreases क्योंकि सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूज किया है, तभी तो ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में गया. अपने आप चला गया क्या? नहीं. सिस्टम की जो अपनी इंटरनल एनर्जी थी, वो एनर्जी ने इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, तब तो ये मास भी ऊपर चला गया पिस्टन के साथ साथ. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द वर्क ऑफ एक्सपांशन. एंड ड्यूरिंग दिस, energy
of the system decreases. So work done by the system on the surrounding at the expense of its own energy. At the expense of its own energy, and we call this as a work of pressure volume type of work, where system has performed the work over surrounding. ओके, अब एक और रिएक्शन कंसिडर करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर द रिएक्शन. रिएक्शन क्या लेते हैं हम? वी टेक अमोनिया गैस NH3 in gaseous form. HCl is also in gaseous form. When these two are allowed to react, we know the product NH4Cl. And this NH4Cl is produced in solid state. तो यहाँ भी वैसा ही consideration. Let us consider a cylinder having frictionless movable piston, which is having some mass over it, and here we take NH3 gaseous plus HCl gaseous. So this is before reaction, initial state. अब सेकेंड में क्या करें कि यहाँ पर if we allow this NH3 and HCl to react together, what will happen? They get quickly converted to अमोनियम क्लोराइड सॉलिड. अब क्या होगा यहाँ पर? ये गैसियस सिस्टम में है तो ये इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा, बट व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस producing what? NH4Cl solid. So this is after the reaction. And what happens to the piston and the mass? Piston and the mass moves in downward direction. Piston and mass moves in a downward direction. And because of why it moves in downward direction? Because this gaseous volume decreases. This gaseous volume decreases to volume V2. So decrease in volume यानी गैस क्या होगी? कॉम्प्रेस होगी, और कॉम्प्रेस हो गई तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, और इसीलिए ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया. तो यहां पर जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया या कम हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया, और जो प्रेशर था गैस का वो कम हो गया, इसीलिए ये पिस्टन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया. तो अब यहां क्या हो गया? फिर से अब यहां क्या हम कंसीडर करेंगे कि जो एनर्जी है ये एनर्जी सिस्टम ने गेन किया. सिस्टम has gained energy from surrounding. It has gained energy from surrounding, that is P external, and perform a work of compression. सो फिर से ये वर्क जो हो गया ये प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क हो गया. नाउ
अब ये जो वर्क ऑफ कंप्रेशन ऑफ गैस जो देख रहे हैं हम, इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, बोल सकेंगे ऐसा हम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, work done on the system by the surrounding, and that's why compression takes place, and during this process system has gained energy. तो ये Q amount of heat energy यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर Q amount of heat energy ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, सिस्टम अपनी एनर्जी यूज कर रहा है टू पुश द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. तो जो Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर हम कंसीडर करें, Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज नेगेटिव लॉस, एंड हियर the system is gaining energy from the surrounding, and therefore Q is positive in this process of compression, and that's why this is also a work of what type, pressure volume type of work. So this pressure volume type of work we have proved by considering decomposition of hydrogen peroxide, where initial volume was less, but the final, after the reaction, volume increases because of formation of gas which push the piston in upward direction, increase in volume, decrease in external pressure, and such work is what, pressure volume type of work. During this process, system has used its energy. System has used its energy to bring about the expansion of gas, and therefore heat energy or heat is always negative. Whereas दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि अमोनिया गैस लिया, HCl गैस लिया, तो they have their own initial volume, but when they are allowed to react, they produces ammonium chloride, and as soon as ammonium chloride is formed, its volume get decreased and external pressure will be greater than the pressure of the system. As a result, this piston moves in downward direction, causing a compression process. तो compression of gas, तो सराउंडिंग ने एक वर्क किया किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर. इसको हम बोलेंगे कैसा, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सिस्टम by the surrounding, and such type of work is once again a pressure volume type of work, which is compression of gas. And during this process, system has not utilized its energy. It has gained energy, it has gained heat energy from the surrounding, and therefore heat energy Q is always positive in this compression of work, and Q is always negative in expansion of gas. So this is what beta we discuss nature of heat and work in a thermodynamic system. And what type of work in thermodynamics? Pressure volume type of work, वो compression हो या expansion हो. हमने क्या finally confirm किया कि in thermodynamics work is a pressure volume type of work. Okay, we will continue in the next class. See you in the next class. Thank you very much.